श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचं कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। प्रोडास्यः पातु मां नित्य मीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः।
वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीव भुवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात्। सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्।
एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। 2 वारं वा 3 वारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीव भुवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य 11मुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात्। सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमे वार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। प्रोडास्यः पातु मां नित्य मीशान्यां रुद्ररूपधृक्।
रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम् एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीवभूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा ॐ स्फें शिखायै वषट् ॐ स्फें कवचाय हुम् ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः तर्जनीभ्यां नमः ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः मध्यमाभ्यां नमः ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः अनामिकाभ्यां नमः ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमेवार्घिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः
पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यां रुद्ररूपधृक् रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम् एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिंशत्सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीवभूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा ॐ स्फें शिखायै वषट् ॐ स्फें कवचाय हुम् ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः तर्जनीभ्यां नमः ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः मध्यमाभ्यां नमः ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः अनामिकाभ्यां नमः ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं
सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमेवार्घिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यां रुद्ररूपधृक् रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम् एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मना नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीव भुवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे
अक्षयक्षयकारकः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमेवार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीव भुवेन्दुमुखी निरीक्ष्य। संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं। वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात्। सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।
ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमेवार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीव भूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य। संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं। वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात्। सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः। वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे
पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदम्। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमेवार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीव भूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य। संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं। वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात्। सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं
मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुमे वार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीवभूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य। संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो कृतं हनुमतः प्रभोः। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं। वक्तुं प्रचक्रमे तत्र
लोपामुद्रां प्रति प्रभुः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीवभूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य। संहृष्टचितापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। कुम्भोद्भवदया सिन्धो
कृतं हनुमतः प्रभोः यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दया कुरुमपि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं कवचं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरात् सनन्दनाय च महच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मत्यनां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य सनन्दनऋषिः प्रसन्नात्मा एकादशमुखी श्रीहनुमान् देवता अनुष्टुप्छन्दः वायुसुतबीजं मम सकलकार्यार्थे प्रमुखतः मम प्राणशक्तिवर्धनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ स्फ्रें हृदयाय नमः। ॐ स्फ्रें शिरसे स्वाहा। ॐ स्फें शिखायै वषट्। ॐ स्फें कवचाय हुम्। ॐ स्फें नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ स्फें बीजशक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजा। अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्रौं बीजात्मनथनयोः पातु मां वानरेश्वरः। तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्षं बीजरूपकर्णो मे सीताशोकविनाशनः। मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। अनामिकाभ्यां नमः। ॐ वं बीजार्थश्च कण्ठं मे अक्षयक्षयकारकः। कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रां बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ वं बीजं कीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोरदं। सौमं बीजमयी मध्यं मे पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्घिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपाद्मस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मां चाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौवेर्यां पातु मे सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्य मीशान्यां रुद्ररूपधृक्। रामस्तु पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजम्। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चौग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचसिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षाल्लभते नात्र संशयः।
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीप्तिमेताद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णीवभूवेन्दुमुखी निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। इति श्री एकादशमुखी हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।